यूट्यूब चैनल मास्टर गुरु पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 1। नाउ आई एम गोइंग टू टीच 12th बोर्ड ISC and the second chapter is matrices and determinants. So आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें आपको हमारी क्लास कैसी लगी है कैसी नहीं। इसी के साथ हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। जैसा कि आज हमारा नया चैप्टर है मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 1। स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। आई होप आप सबको ये अच्छा लगेगा। What is matrices? Matrices is the plural form of matrix. Here you all can see matrices is the plural form of matrix. Then we have to come what is matrix. So matrix, if one or more number are established in a row or a column between a rectangular array is called matrix. What is matrix? If one or more number are established in a row or a column between rectangular array is called matrix. What is rectangular array? This bracket is called rectangular array. After that we have to come on the next point. What is row? Horizontal line is known as row. Horizontal line is known as row. And the vertical line is known as column. And the vertical line is known as column. Then order of matrix. What is order of matrix? Number of rows into number of columns. Number of rows into number of columns. Here R into C. It is row and it is column. And the most important point, which is the note R into C, row and column does not equals to column into row. मतलब कि इसमें हम रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रो एंड कॉलम हमें कभी भी कॉलम और रो के मल्टीप्लाई का इक्वल नहीं होता है। तो सो दैट इज it is row and it is column. One row and the 3 columns and the 1 column in which 3 rows are there. So clear? So now we have to come on the next point, that is example on a question. So ये हमारा नया क्वेश्चन, you can see this question. If A is ABC 4 1 2 3 4 minus 1 2 3 6, then find number of rows, number of columns, number of elements, order of A. So what is the number of rows? Number of rows. Count 1 row, 2 row, 3 row. So here we can write 3. And the number of columns 1 2 3 4. Number of elements. What number of elements? R into C. So R, here R is 3, so 3 into C, 4 equals to 12. Order of A. Order of A is equals to R into C. Here 3 into 4. Order ये आएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम इसका। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ ऐसे ही रहेगा। So now we have to come on the next.
is represented by capital letters A, B or C, D. Continue. Element of matrix is represented by small letters. So element means जो भी करा 3 to 4, it is represented by जो ब्रैकेट में हमारा आया था ABC4, वो हमारा ABC से रिप्रेजेंट होगा और जो कैपिटल होगा वो A से. So our my name heading now. Describe of element in matrix. We have a matrix order of m into n. हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m into n. तो उस m into n में हम कुछ भी लेट कर सकते हैं. तो आइए लेट कर सकते हैं. A1 एक रो फिर कॉलम ऐसे हम लेट करते रहेंगे. A11, A12, A13 ऐसे हम लेट करते रहेंगे A1n तक. अब आता है A21, A22, A23, A2n तक. अब आता है हमारा A31, A33, 32, A33 ऐसे A3n. अब ऐसे हमारा आ जाएगा AN1 और ये चला जाएगा हमारा ANN. सो ये भी हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m into n की. A11, A12, A13, A11. A1n इनफिनिट इसके आगे कहीं भी जा सकती है. A12, A13, A123 इसके आगे कहीं भी जा सकते हैं. A2n तक. 131, A32, A33 फिर आगे कहीं भी A3n. ऐसे नीचे तक आएगी AM1 तक. ये सेकंड रो AM2, थर्ड कॉलम AM3, AMn तक. तो इसमें होता है एक और चीज, इट हैज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय represented by A is equals to Aij का होल m into n. m into n A इसका ऑर्डर होता है और ये Aij. तो ये हमारा इतना अगर नोट करना चाहें तो नो you will note it there. So now we have to come on the next questions. एग्जाम्पल सेट में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके. बहुत ही बेसिक सा है. सो नोट करना तो नोट कर लीजिए. So अब आता है हमारा नया क्वेश्चन. So the question है if A is equals to 1 0 minus 1 2 0 4 3 2 5 7 8 9, then find number of rows. कितने number of rows हैं? Number of columns. Number of columns. What is number of columns? Number of elements. इसमें elements कितने हैं? Order of A. इसका order क्या है? A का order क्या है? And the here Aij. हम लोगों ने पीछे पढ़ा what Aij वाला. So इसमें Aij बताना. तो let's solve it. Number of rows 1 row, 2 row, 3 row, 3 rows. Number of columns 1 2 3 4 4. Number of elements R into C. R कितने? 3, columns 4. तो multiply 12. Order of A R into C. R हमारा कितना है? 3 into हमारा C कितना है? 4. Order of A is 3 into 4. कभी भी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. Don't forget this. अब हमारा Aij1. तो इसमें था ना A13. Which is A13? A13 means that is one is row and the third is column. So A13. First row, third column. Here it is the first cell -1 and the A32 third row second column. There 7. A34 means third row fourth column 9. A31 third row first column
जैसे कि निकाला है यहाँ पर, तो A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दैट डिवाइड इज फर्स्ट ऑफ एलिमेंट इज माइनस A32 थर्ड कॉलम सेकंड रो, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सॉरी थर्ड रो सेकंड कॉलम which is third row second column 7. A34 is third row and fourth column which is 9. So आपसे निकालेंगे, तो come on the next. So अब हमारा आता है, मैंने उसमें पहले नहीं बताया था what is AIJ. A is equals to IJ, ब्रैकेट में होगा क्लोज ब्रैकेट. I इसमें क्या होता है, what is I? I is denoted by row and the J is denoted by column. So I is denoted by row and the J is column. तो हम हमारे नया क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट 2 into 2 की मैट्रिसेस A is equals to AIJ जिसका ऑर्डर M into N हो. If Aij is equals to I plus 2j, क्या Aij is equals to 2j, the values. So अब हमारा ये क्वेश्चंस, अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो 2 into 2 की मैट्रिक्स यानी कि जो हमने M into N का ऑर्डर अभी बताया था, ये था A11 A12 ऐसे चला जाएगा, A21 A22 ये ऐसे और ये ऐसे चला जाएगा. तो हमें 2 into 2 की मैट्रिसेस यानी कि जिसमें 2 rows and 2 columns, so 2 rows and 2 columns, so इसके हमारी मैट्रिसेस होगी ये A11 A12 A21 and A22. so हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया 2 into 2 का मैट्रिसेस. अब हमें Aij की वैल्यू बतानी है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Aij, ऑर्डर जिसका M into N जो हमने कर लिया है. अब Aij is equals to I plus 2j. अब इसको हम पहले लेंगे A11. सो A11 is equals to I हमारा क्या है, Aij is equals to I plus 2j. I plus 2j हमें रखना है यहाँ पर. सो ये I plus 2j तो हमारा दिया हुआ है, I हमारा यहाँ पर क्या है 1 plus 2 into j. What is the value of j? There is the 1. So calculate कर लें, तो 1 plus 2 is equals to 3. So here A11 is equals to 3. हमारे फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू आ गई 3. अब ऐसे सेकंड की A12 is equals to I plus 2j. So यहाँ पर I की वैल्यू हमारी 1 प्लस j की वैल्यू हमारी 2, तो 2 into 2, so 1 plus 4 is 5. So j the second value आ गई हमारी 5 and the third is A21. So I plus 2j, तो ये आ जाएगी हमारी is equals to I हमारा 2 प्लस में j हमारा 1 into 2 into, तो इसको ऐसे कर देते हैं 2 into 1. so इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 2 plus 2 is 4. so थर्ड एलिमेंट की वैल्यू आ गई हमारी 4. अब आता है हमारा फोर्थ A22 is equals to I plus 2j. तो ये आ जाएगा हमारा I इसमें दिया हुआ हमारा, you can see I is 2 and the j is 2. so 2 plus 2 into 2 which is 2 का मल्टीप्लाई j में, तो 2 plus 4 is 6. तो हमारे चारों एलिमेंट्स की वैल्यू हो गई 3 5 4 6. अब हमें एक एलिमेंट एक ऑर्डर हमें कंस्ट्रक्ट करना, तो यहाँ पर हमें वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ A11 3, value of A12 5 and the value of A21 4 and the value of 6. तो ये हमारा हो जाएगा आंसर. सो हमारे कंस्ट्रक्ट 2 into ये मैट्रिसेस थी जिसकी ये वैल्यू आ गई A11 की.
ऐसे आप इसको और भी ट्राई कर सकते हैं घर पर अपने बुक से। मेरे पुरान की बुक है क्लास 12 की, सो देख सकते हैं। सो अब हमारा नया आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं। तो पहला हमारा है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? A matrix having one row is called row matrix. A matrix having one row, for example, A, B, C, D. So here one row. A matrix having one row is called row matrix. Then second, column matrix. Column matrix. So yeah, the matrix. Now what is column matrix? Column matrix is the matrix which is having only one column is called column matrix. For example, A, B, C, D. There is column matrix A, B, C, D. What is column matrix? Column matrix is the element, the square bracket whose having only one column is called column matrix. That is the example. Then third is square matrix. What is a square matrix? So what is square matrix? A square matrix is the number of elements, in the square matrix. The number of rows and the number of columns are equal in the matrix. In this matrix is called a square matrix. Here the example is just like A, B, C, D. Here is two rows and two columns. The number of rows and the number of columns is equal. So this matrix is called square matrix, and the value 1, 2, 3, 4. This the two rows and two columns. The number of rows and the number of columns are equal. So this matrix is called square matrix. Column matrix, the number of rows, the number of element having only one row is called column matrix, and the row matrix. So now move to the next point, the next types, which is identity matrix. If you want to note some things, then the note in this, if I raise so what is identity matrix? Identity matrix is also known as unit matrix. Identity matrix is also known as unit matrix. So what is identity matrix? Identity matrix is the diagonal or sorry. Identity matrix is the element of a square element. The matrix of a square is having all main diagonal is 1 and the other element is 0. So construct the matrix 1, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. A matrix, a square matrix having the main diagonal is 1 and the other element is 0 is called identity matrix or a unit matrix. Here the second 2 into 2 matrix 1, 0, 0, 1. Here the second is both the 2 into 2 matrix and 3 into 3 matrix. So the square matrix having only main diagonal is 1 and the other is 0, so it is called diagonal matrix or identity matrix or unit matrix. So next we have to move on the scalar matrix. So what is a scalar matrix? Scalar matrix, a matrix having all element, all the main diagonal element are equal and the other element is 0, and it is known as scalar matrix. What is, I repeat, what is scalar matrix? A scalar matrix having all main diagonal is same or equal and the other element is 0, it is called a scalar matrix. For example, 0, 1, 1, 0, 0, or 0, 1, 0, 0, 0, 1. Here the diagonal is same, or 2, 0, 0, 2. Diagonal is equal 3, 0, 0, 0, 0. 3. Here you can write all things something else, or the diagonal is equal or the 2 into 2 matrix or the 3 into 3 matrix, the diagonal is same, here equal. So next we have to come on the diagonal matrix. So now we have to come diagonal matrix. So what is diagonal matrix? All element, a square matrix. What is diagonal matrix? A square matrix having all elements of a main diagonal are established. I repeat, a square matrix having all elements of a main diagonal are established, and the other element is 0, then this identity is called diagonal matrix. For example, the main diagonal is established. मतलब main diagonal कुछ भी हो सकता है. The number of which are you, the question are given, question जो भी दे हमारा, तो 1, 2, 3 and the other element is 0 is called diagonal matrix. Now समझ में तो आ रहा है? मैं बहुत सिंपल सा बहुत बेसिक चीज बताता हूँ. Now we have to come on the next type, null matrix. Whenever I'll questions जब करेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा अच्छे से. So what is null matrix? The square matrix having all elements are 0, which is diagonal or a straight, and the other element which all elements are 0 is called null matrix. For example is 0, 0, 0, 0 and the 0, 0, 0. All element diagonal, straight, rows, columns, all elements are 0 is called null matrix. So here all types are covered, and now we have to come on the questions. So we will do some questions. हमारे सेकेंड लेक्चर में हमारे
which option are correct? That there the matrix is given 1 0 0 0 2 0 0 0 3. So अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसा ऐसा मैट्रिक्स हम किसे कह सकते हैं. So there is an option, which option is correct? Square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स. व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है जिसका कोई भी डायगोनल या कोई भी एलिमेंट सेम हो या फिर कुछ भी, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है. स्क्वायर मैट्रिक्स है जो भी डायगोनल भी है, एलिमेंट जीरो भी है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ना. स्केलर मैट्रिक्स. सो व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स? तो यहाँ पर था स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स हमारा क्या था? स्केलर मैट्रिक्स हैविंग ऑल मेन डायगोनल आर इक्वल और सेम एंड देन द अदर एलिमेंट इज जीरो. सो इसमें द मेन डायगोनल इज 1 2 3, द सेम एंड द अदर इज जीरो, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है. देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज identity matrix is all the main diagonals are the one or the sum of this is called. तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, आइडेंटिटी, तो इसे हम ऑल ऑफ दोस कहेंगे. ऑल ऑफ दोस जिसमें सारे तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? सारे करेक्ट है. इसमें ऑल ऑफ दोस हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है. सो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. So now the next question is, so हमारा नया क्वेश्चन है, we have the matrix of 12 elements. Find the So हमारे पास एक क्वेश्चन है, we have the matrix of 12 elements, so find the possible order of matrix. हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके 12 एलिमेंट्स है, तो हमें उसके पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करना है. तो पॉसिबल ऑफ ए ऑर्डर क्या होगा? सॉल्यूशन पॉसिबल 1 into 12 की मैट्रिक्स हो सकती है. 1 into 12 की मैट्रिक्स हो सकती है, और 12 into 1 की मैट्रिक्स हो सकती है, फिर 3 into 4 की मैट्रिक्स हो सकती है. व्हाट इज 3 into 4 की? सो ऐसे ही 4 into 3 की मैट्रिक्स हो सकती है, एंड देन 6 into 12 की मैट्रिक्स हो सकती है, एंड 6 into 2 की मैट्रिक्स हो सकती है, और 2 into 6 की मैट्रिक्स हो सकती है. सो 2 into 6 की मैट्रिक्स हो सकती है या 6 into 2 की मैट्रिक्स. सो नाउ यू कैन सी there is no other option which is possible. सो हमारे पास यही तीन है जो पॉसिबल हैं. अगर आपको लग रहा हो तो वैसे वो फिर अब है नहीं कोई. 1 into 12 की मैट्रिक्स इज 12 into 1 की मैट्रिक्स भी हो सकती है, 3 into 4, 4 into 3, 2 into 6, 6 into 12. सो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर है जो 12 एलिमेंट्स के हो सकते हैं. सो नाउ वी हैव कम आउट द नेक्स्ट. So here, हमारा क्वेश्चन, if two matrix A and B, each side of M into N, then their sum A plus B matrix obtained by adding corresponding elements. So क्या ये हमारे पास A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, A and B is given. So we have to find A plus B. So A plus B, A and plus B. So there is the solution. A plus B is equals to A 2 3 4 6 and plus B. There is the sign 1 minus 4
plus y minus 4. So 3 plus in bracket minus 4, and then the 4 plus 2 is 6, and the 6 plus 3 is 9. So here is given a plus b. A plus b is equals to, here is given 3, 6, and the 3 plus 4 plus minus minus. So 3 and minus. So here is the minus 1 and the 9. So the matrix of a plus b is 3, minus 1, 6 and 9. So are you getting this? Now the today's lecture is over, and we have to come on the second lecture, which is the questions based for ISC boards, and the examples we have to. तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है ओवर, और हम मिलते हैं अगले बार तो सेकंड लेक्चर में. सो बाय बाय.